Good evening, guys. Am I audible? Hello. Okay, I think there is some problem with the link which I've created. I need to allow people to join in again. So I was thinking कि दूसरा link बनाओ या फिर इसी को करते हैं. चलो ठीक है, I'll just wait for a couple of minutes. Let all people get in. Then we'll start. Okay, so let's start this session. And before we start, let me just confirm that all of you who have joined this session must have gone to the previous three session, right? So anyone who have just joined this particular session, definitely this session is not for you unless you have gone through the three sessions which we have taken on the same topic, that is Venn diagram. Okay, so you can remain in the session, that's not a problem, but it will be difficult to cope up with the solution which I'm providing, because we have discussed a certain technique that how do we counter maximum minima kind of thing. So obviously you may not be getting the solution at all. Okay. So अगर नहीं किया हो तो I'll recommend that don't waste time in this session. You can just go through the previous three session and then go through the recording of today's session, maybe tomorrow or day after tomorrow. ठीक है भाई, clear है? चलो, so let's start the session. So first thing first is that let me just ensure that all of you have understood the method of maxima minima which we have taken in the last session. कोई doubt है कहीं पे? You can just ask me so that we can do a quick revision of the same and then we can move forward to the questions. आज सिर्फ questions ही करने हैं. Maybe today's class is not going to be a lengthy class. We'll just do some practice. उसके बाद फोर वेरिएबल वाला भी आपको बता दूंगा, और 3 से ज्यादा वेरिएबल वाले में भी मैक्सिमम मिनिमम कैसे हैंडल करते हैं वो बता दूंगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट है लास्ट सेशन में जो भी किया था मैंने? You can unmute and say, or else we can move directly to the questions. नहीं है ना सभी को? देख लो भाई. चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. एनीवे विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो कोई डाउट अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो यू कैन जस्ट टेल मी देयर इटसेल्फ. ठीक है, चलो, these are the two questions, right? What you can do is that you can just ignore this set first. I'll give you 5 minutes. Solve it at the second preference, right? Give this at the first preference, because this kind of question we have already done. This I'll be explaining, although we have done a similar kind of things previous also, but still I'll just explain that how to find maximum minima in case the intersection values are also given. ठीक है, चलो 5 minutes का टाइम है, प्लीज स्टार्ट.
Okay guys, so let's start the solution. Tell me, इसको पहले solve करते हैं. कितना आ रहा है? We have to find the minimum for all three and maximum for all three. Direct application of the method which we have done last time. कितना आएगा आंसर? Quickly. How much? Minimum and maximum. नहीं बना? Simple है यार. This is 80, which is English. This is Spanish, which is 70. This is French, which is 60, right? इतनी वैल्यू दिया and it is given that the union is 120. Why union is 120? Because it says that in the class, every student in the class can speak at least one of the language. That means all these 120 must speak one, two, or all three language among these three. Okay, there is no one who is not speaking any of these three language, right? So clearly we can say that 1 plus 2 plus 3 will be equal to sum of these three. कितना आएगा मुझे बताओ? And this is nothing but the value of 1. How much is this? What is the total? 210. Correct? Wherein the value of 1 is what? 120. So on substitution, can I say I'll be getting 2 plus 3, at least 2 plus all 3 should be equal to 90. Am I correct? Now if I want to find the minimum, can I do this? We have to ensure that this condition should be valid. Is there any condition which is getting violated? Is not following, any condition which is not following, like is getting incorrect. ठीक है, 0 होगा. टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं. 2 is 90, right? At least 2 is 90 and at least 1 is 120. So 30 का जुगाड़ करना है, because अगर ये 0 रखता हूँ तो 30 का जुगाड़ करना है. तो what we can do is that we can do like this, so that we can distribute 30, 30, 30 here. Now you can check everything. Yes or no? So minimum is 0 possible. So 0 is the answer for this. Agree everyone? ठीक है, चेक करके देख लो. This is 80, this is 70 and this is 30, and overall if you add them it's going to be 120. तो यूनियन भी फिट बैठ रहा है, सारे कंडीशन फिट बैठ रहे हैं, ये भी कंडीशन फिट बैठ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज हाउ मेनी गॉट द मैक्सिमम. अगेन यहां तक तो सब चीज सेम है, राइट? कितना होगा बताओ? मैक्सिमम 2 plus 3 is equal to 90. What could be the maximum value? 45 for sure, because this is the way wherein we can ensure this. ठीक है ना? Right? So 45 becomes the right answer. Now if you want to test whether 45 कैसे होगा, that too we can do here. ठीक है. Now both are 45. That simply means that if this is 45, these thing has to be 0, so that at least 2 also become 45. अब ये 80 था, so obviously this will be how much? 35. This was 70, right? This is 80, this is 70. So this will be 25 and this will be 15, so that this becomes 60. Now you can ensure that the union is 120 also. करके देख लो आप. These two together is 80. These two together will make it 30. 80 plus 30. These two together is 40. So 80 plus 40 is 120. Am I clear, everyone? So the answer for the second one is 45. ठीक है ना भाई? क्लियर है सबको? आगे बढ़े. चलिए अब आती है वाली क्वेश्चन पे. This question is also a very interesting question. Here we cannot apply the method of this method. The reason being, this method is only applicable wherein only the full circle values are given, not their intersection. Because while doing this manipulation, we cannot handle the exact value of their intersection also. ठीक है. तो क्या वो डिफिकल्ट होता है? नहीं, बहुत सिंपल होता है. इनफैक्ट इससे भी इजी हो जाता है. कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. So there are 3 electives, right? The total number of people is 92, but here it says that with no compulsion to select any. That means 92 is the highest union or highest value of union, or the largest or the maximum value of union can be 92. It has to be less than that, less than or equal to 92. ठीक है. उसके बाद marketing है, which 60 people are opting. Finance है, which 50 people are opting. System है, which I think 50 people are opting. गलत तो नहीं कर दिया? एक मिनट रुक जाओ. Marketing is 60, 80 is finance. Sorry, this is 80. ठीक है. And 50 for system. Further, it says that 40 opted for
MNS। जैसे ये आएगा तो डेफिनेटली वी कैन नॉट अप्लाई वो रोमन नंबर वाला अभी जो मेथड किया था, ठीक है। सो इसको लिखते हैं कितना आ रहा 40 MNS, तो ये 40 होगा, दिस 40 इज सम ऑफ दीज टू, 50 फॉर बोथ MNF, सम ऑफ दीज टू इज 50 and 45 for FNS, this is 45। क्लियर है? इसको x ले लेते हैं। Can you please figure out all these values in terms of x? For example, this value would be what? 50 minus x, this value would be 40 minus x, this value would be 45 minus x। ठीक है ना? अब ये तीनों का मुझे बताओ तो 1 2 3 कितना आएगा x के फॉर्म में? Just tell me those values in terms of x। This is x minus 30, this is x minus 15 और ये x minus 35। करेक्ट है? Can somebody else just ensure whether we have done it correctly or not? ठीक है भाई, क्लियर है? Now here we have to get the minimum value of x। minimum value of x, यही पूछ रहा ना, minimum and maximum। Now the minimum value of x we can ensure just by looking at these 7 places। For example, this thing cannot be negative, so can I say x has to be greater than 30, greater than or equal to 30, otherwise this will become negative, right? Similarly, this is, if x is greater than 30 then definitely this will be positive, right? But this will become negative. So to ensure that nowhere x is negative, x has to be greater than or equal to 35। Yes or no? X has to be at least 35 so that no values of x should be negative। ठीक है? Right? एक बारी x minus 35, x minus 30 एक बारी बता दोगे सर, ये समझ नहीं आता। ये कैसे आया बोल रहे हो? हाँ जी सर। कुछ नहीं, देखो ये पूरा सर्कल कितने का है? 60। यस सर। ये 3 दिए हुए ना तुमको, यस सर। इन सबको ऐड करो, 60 माइनस कर दो उसमें से। ओके 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 ओके, प्लस 40 क्या? थैंक यू। पार्ट में डिवाइडेड है ना, उसका टोटल है वो 60। ठीक है, सो ये 35 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कहना है मिनिमम वैल्यू निकल गया अपने को 35। यस और नो? इफ एक्स इज लेस देन 35 तो डेफिनेटली फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें। सो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इज 35। अब मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे? वी कैन टेक द यूनियन, वी कैन टेक द यूनियन, सबको ऐड करते हैं। नाउ हियर वी कैन सी दैट सम ऑफ these 4 values is actually equal to 80। 80 डायरेक्टली लिख देता हूं, प्लस आई हैव टू ऐड these 3, so it will be x minus 30 plus 40 minus x plus x minus 35। this is the union which should be less than or equal to 92 because 92 is the largest possibility। ठीक है, अब इसको एक बार करके देखते हैं। तो ये तो हो गया 50, फिर हो गया 90, 90 में से 35 हटाते हैं 55, so 55 x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ x is less than equal to 92, so the value of x has to be 92 minus 55, so the value of x has to be less than equal to 37। ये क्या बता रहा है? मैक्सिमम कैप, that means x should be greater than 35 and less than 37, or if I combine both this I'm getting the range of x which is this। ठीक है, so 35 becomes the minimum value and 37 becomes the maximum value, so these are the answers। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अगर इंटरसेक्शन वाला भी देगा तो वो भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। वी कैन जस्ट टेक एवरी प्लेस in terms of the single variable and just to ensure that they should not be negative or fraction or something like that, we can find the minimum value and for the maximum value we can take the union, और जो भी 92 जैसे यहाँ पे देना तो whatever the universe that should be the largest possible, उसके साथ इक्वेट कर देना बस। ठीक है, आगे बढ़ो, सबको क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अब थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि अभी तक हम वी वर डूइंग ओनली wherein there are 3 variable, what if more than 3 variable comes and the question of maximum minima is there? Again apply the same logic। ठीक है, मैं I'll give you good 5 minutes। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस, दीज आर ऑल क्वेश्चन था, मैं नंबरिंग कर देता हूं इनको सो दैट कि बाद में हमको आसानी रहेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, इट कुड बी अ लॉजिकल रीजनिंग सेट जिसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। सो आई विल बी ऑन म्यूट फॉर 5 मिनट्स, प्लीज ट्राई। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you have to use this logic।
ऐसा करना। ठीक है, तो मैंने हिंट भी दे दिया है, यू कैन मूव।
हाँ जी, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। Now here we have given 5 parameters, right? ठीक है, and these are talking about the institutes of which there are 100 coaching institutes and there are 5 parameters in which they are evaluated. Each institute fulfills at least one of the given criteria, ठीक है. So can I say the union of all 5 sets would be equal to 100? Can you please confirm? Yes or no? ठीक है, right. So ये जो parameters होंगे they independently will become a set. So how many different areas there should be? Can I say it should be 2 to the power 5? जितने ही पैरामीटर्स होंगे, जितने ही वेरिएबल्स होंगे, which comes out to be 32, which is very huge. 2 होते तो कितने बनते हैं? There are 4, 3 होते तो 8, 5 से कितने बने? 32. So I don't know, like pictorially is it possible even to draw any kind of figure? Although Google करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, but I am very sure they are going to be very very complicated. ठीक है, they are going to be very very complicated because each and individual values को हम तो निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. 4 तक हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इसके बाद जो सेट है 4 वाला बताऊंगा, ठीक है. But if it is talking about getting maximum or minimum value of at least 1, at least 2, exactly 2, exactly 3, exactly 4, something like this we can very well find by the logic which we have been using. ठीक है. So सबसे पहले मुझे आप बताइए कि what is the sum of at least 1 plus at least 2 plus at least 3 plus at least 4 plus at least 5? ये कितना होगा? Can I say this will be the sum of all these 5 circles? Yes or no? कितना आ रहा है? 151. चलो ठीक. Out of which can I say this is nothing but equal to 100? Fix है ना ये? At least 1 means what? The union. So can I say I can modify it and write at least 2 plus at least 3 plus at least 4 plus all 5, so it would be equal to 100, 150 minus 100, which comes out to be 51. ठीक है. Now what is the minimum number among this? So can I say all 5 cannot exceed 19? The number of institute who are good in all say 5 parameters cannot exceed 19? Yes or no? This is the minimum among the all circles. ठीक है, so we'll just keep it in mind. This is the maximum value. Fine. And we have to also ensure that this rule must follow. This rule must follow. ठीक है. Now let's move to the question. So we have to find both maximum and minimum. एक एक करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन, number of institute which fulfill exactly one criteria. Now what is exactly one criteria? मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आता है. What is exactly one? Can I say this is this minus this? We have to find the minimum value. We want to ensure that this should be 0. ठीक है. रोशन, which part you want? ये 19 वाला बोल. ये समझ में आ रहा? नंबर इंस्टीट्यूट फुलफिलिंग पैरामीटर्स. सर हाउ वी फाइंड सम ऑफ ऑल दिस? इन सबको ऐड करो ना. दैट शुड बी इक्वल टू 1. प्रशांत, हैव यू अटेंडेड लास्ट सेशन? हाँ, तो क्या करते थे उसमें? 3 दिए होते थे तो ये 3 की वैल्यू क्या होती थी? इन सबका सम ना. 5 पे तो क्या करेंगे? सभी को 5 को सम करेंगे. ठीक है. तो 19 कैसे आया समझ में आ रहा है ना अभी? If I want to find that how many institute maximum can fulfill all 5 criteria, so obviously that should be minimum among these 3 ना. ठीक है रोशन, राइट. अब इसको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए कैन आई से वी शुड ट्राई टू मेक इट 0. We should try to make it 0, right? 1 is nothing but 100. So actually it is 100 minus 2, which should be equal to 0. But is it possible? Is it possible? Of course not. It's not possible. Why so? Because the maximum value which I can give to any one of this is 51. And we have to ensure that this relation should be valid.
So the only way wherein I can maximize this, if I have to maximize this, I have to minimize each one of them, na? Ensuring this. So what I can do is that I can give 0, 0 to them and 51 to it. ठीक है, तो मिनिमम के लिए कितना आ जाएगा 100 minus 51 which comes out to be 49. So 49 would be the minimum value. Is it okay everyone? ठीक, अब मैक्सिमम निकालते हैं. So 100 minus 2 we have to maximize it. ठीक है, so for this it should be minimum. Yes or no? इसको हटा दूं. Now if I want to minimize this, can I make it 0? No, otherwise this will become some value of 51. So what I have to ensure that this will be greater than equal to this, this will be greater than equal to this, this will be greater than equal to this. At the same time, this will be the minimum value. So can I say I should equally distribute 51 among these four? Yes or no? But 51 is not multiple of 4. So nearest thing which is multiple of 4 is 48. 48 divided by 4 will give me 12. So what I should do is that 12, 12, 12 बांट दिया. Again, I am left with 3. यहीं से बांटना चालू कर देते हैं. तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना. This is the best way wherein I can minimize this. नहीं 15 क्यों 13 में तो कर सकता हूँ ना. इक्वल तो कर ही सकता हूँ मैं. हरी बात समझ में. ठीक. So that means the maximum value would be what 100 minus 13 which comes out to be 87. So इसकी maximum value कितनी हो जाएगी 87. हरी बात समझ में सबको. ये जो मेथड है ये कितने भी पैरामीटर दे दो उससे कोई फर्क नहीं. ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट वाला बताओ. नेक्स्ट वाला सॉल्व करो. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और सेम लॉजिक है मैं कुछ नहीं मिटा रहा हूं. एग्जैक्टली टू क्राइटेरिया मींस दिस माइनस दिस. इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. करिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. हाँ जी ठीक है. चलिए मिनिमम तो 0 होगा ऑफ कोर्स. Minimum value is 0 because we can have both the values same like this. We should try for 0 है ना minimum के लिए. तो minimum तो 0 ला सकते हैं because we can keep both 13, 13 यहाँ पे दिख ही रहा है. तो minimum तो 0 है. What about the maximum? What about the maximum? So for maximum 2 minus 3 if I want to maximize it, I should ideally try that this should be 0 and this should be as more as possible, right? So 51 0 possible है क्या? ऐसा possible है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. पॉसिबल है राइट. ठीक. सो इसका आंसर 51 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. सिमिलरली थर्ड वन. थर्ड वाला क्या बोल रहा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच फुलफिल एग्जैक्टली 3. एग्जैक्टली 3 इज व्हाट 3 minus 4. दिस वी वांट टू मिनिमाइज. ऑफ कोर्स इट विल बी 0. right? We can have 13, 13, 13, 12, wherein both the values are equal to so it becomes 0. So minimum value to 0 आती. What about the maximum value? 3 minus 4. If you want to maximize it,
Of course, I would like that this should be 0 and this should be as much as possible. Can I keep it 51? Can I keep it 51? No. Why so? Because the moment I keep it 51, इसको 0 करना पड़ेगा, है ना? 2 वाले को 0 करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते ना? Then not the way, because ये relation फिर invalid हो जाएगा. ठीक है? But what we can do is that we can keep these two 0 and 51 should be distributed among these two equally. इसको maximize करना है, इसको minimize करना है, but this value has to be greater than this. So obviously I can have 25 and 26. So अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसकी maximum value कितनी हो सकती है? 25. So 25 minus 0, 25 becomes the answer for the second one. Second part of the third question. ठीक है? Fourth, exactly 4. Exactly 4 in the sense at least 4 minus all 5. Can be equal to 0. Yes, इसी वैल्यू को ले लेते ना, दोनों 0 0 है. 0 हो गया तो मिनिमम तो 0 है, उसमें दिक्कत नहीं. What about the maximum? Keep it 0. Can I keep it 51? No, from the same logic. ठीक है, इसको 0 रख सकते हैं, लेकिन इनको 0 नहीं रख, इसको 51 नहीं रख सकता, right? So this is 0. Now these three, can it be equal? Yes, they can be 17 each. So in that case, it should be 17 minus 0, which comes out to be 17. So 17 becomes the answer. See, now all 5 definitely the minimum is 0. What is the maximum? What is the maximum? If I want to maximize this, then I have no other option but to keep it 12, because इससे better तो कुछ कर ही नहीं सकते थे ना. We can't increase it to 13 because 13 इसको रखूंगा तो ये भी at least 13 होगा, ये भी at least 13, ये भी at least 13. So 13 into 4 will exceed 51, right? So the maximum value of this is 12. ये आपके आंसर हो गए for all these questions. I hope I'm clear in this and you're understanding the method also. ठीक है भाई, आगे बढ़े. चलो लास्ट चीज करते हैं, विच इज 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन ले लिया डायरेक्टली, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना. The only thing you need to understand that if there are 4 variables and each of these values are given, then how do we make the structure? ठीक है. So the question asking the number of instrument but not the maximum minimum. का number of instrument पूछ रहा है ना, find the maximum minimum of this. उसके बाद सारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, ये जो क्वेश्चन. ठीक है, right? So for example for 3 we make like this. Similarly for 4, some of you might think कि सर ऐसा बनाए क्या. अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ये गलत है, because for 4 the number of different areas should be what 16. अगर इसमें काउंट करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. 16 मिलेंगे नहीं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, राइट, देन 5 6 7 8, राइट, फिर 9, ये वाले को 10 ले लेते हैं, 11 12 और ये हो गया 13. और कोई शायद एक मिस हो गया होगा, मुझसे तो पता नहीं. ठीक है, तो इसमें 16 बनते नहीं है अगर हम इस तरीके से जाएंगे. सो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर 4. तो उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको देख लेते हैं. वो आपको याद रखना ना कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो कैसे बनाना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, कौन से मेथड से, हाँ मैक्सिमम मिनिमम वाला आपको बताया, उससे तो कोई सही बन सकता. बस होता क्या है ना, आपको जो सेशन नंबर 2 लिया था ना, उसमें जो क्वेश्चन लिया था वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ये आ गया तो डेफिनेटली एक बार आप समझ गए तो यू कैन जस्ट हैंडल इट. 4 वाले को कुछ इस तरीके से बनाते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर पहले से मालूम होगा तो ही हम बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे. तो इसलिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको. ठीक है, ये होता है 4 वाले में. नाउ इफ यू काउंट द डिफरेंट एरियाज, इसमें एक बार डिफरेंट एरियाज को हम काउंट करते हैं. दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 6 तो ये हो गया, और ये 3 क्रॉस 3 का बनाया 9. कितने हो गए? 9 plus 6 is what? 15 and 1 outside this, हो गए 16. ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई कॉल इट ए, कॉल इट बी, कॉल इट सी एंड कॉल इट डी.
ठीक है, आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसको पहले अच्छे से एक बार पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज रीड इट आउट। ठीक है, so it's saying that there are 4 different types of biscuit and it is giving that how many people like what kind of biscuit or what combination of biscuits also. ठीक है, तो यहाँ पे जो A बनाया है, जस्ट okay, so what is set A? We have to take the intersection of A with B, A, B and C, A, B and D also, then B and C, B, C and D also, then C and D, then A, C, D also, right? Then A, B, D also, then B, C, D also, something बहुत सारे होंगे. So those are 16 places. ये 16 places होगा. अब इसको read कैसे करना है उसको देखिए. Set A is actually this. मैं इसको draw कर रहा हूँ. Set A is this. ठीक है, थोड़ा सा visualize करना, right? Then set B is this. Right? Similarly, set C is this. And set D is this. ठीक है, क्लियर है? अब मैं लिखना चाहता हूं, दिस एरिया इज ओनली ए. एग्री? दिस पोर्शन इज नॉट गेटिंग इंटरसेक्शन विद बी, सी और डी. दिस इज ओनली ए. सिमिलरली दिस एरिया इज ओनली बी, दिस एरिया इज ओनली सी एंड दिस एरिया इज ओनली डी. एक बार देख के मुझे बताओ, कंफर्म करो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ठीक, दिस इज ए एंड बी ओनली, because this is an intersection with set A and set B only. This is an intersection of set C and D only. ठीक है? Can you tell me intersection of A and C? A and C only. This, एक बार ध्यान से देखो. This is an intersection of A and C. Correct? Similarly, this is an intersection of A and D. This is an intersection of B and C. This is an intersection of C and D. अच्छे से देख लो. Right? Now, intersection of 3 sets taken together. A, B, C, B, C, D, A, B, D, and A, C, D. ये BCD है, ये आपका BC नहीं. ठीक तो है ना? ठीक तो है क्या? कहीं गड़बड़ किया क्या, बताओ? जहाँ पे आपने CD लिखा BD नहीं होगा? कहाँ पे? ये सर बी वाली लाइन में लास्ट. यस सर. अच्छा हाँ, ये राइट. ठीक, दिस इज BD. ठीक, और ये बीच वाला है, दिस इज ABCD. यू कैन सी दैट द सेंटर वाला स्क्वायर, इट इज
overlapping with all the four sets. ठीक है, यही बस पता करना होता, बाकी यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फिर कुछ नहीं है इसमें, करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। सो लेट मी टेक अ स्नैप ऑफ दिस। ऐसा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 चिल्ड्रन लाइक ऑल 3 ए बी सी, ये 10 है ना, राइट। 15 लाइक ऑल 3 बी सी डी, ये है। 40 लाइक ए, ये 95, दिस इज 75 एंड दिस इज 55, ठीक है। 70 children like taking only one biscuit. That means the value of A plus B plus C plus D here is 70. ठीक, those who like A do not like D. Those who like A do not like D. उसका मतलब क्या हो? Can I say this values should be equal to 0? Anyone who likes A is not liking D, so there is no intersection of A and D. ACD भी 0 हो जाएगा, बिकॉज A and D का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, तो ACD भी नहीं हो सकता फिर। ठीक है, और ये दिया हुआ अपने को 70। We have to find that how many children like exactly 2 biscuit. How many children like exactly 2 biscuit? अब exactly 2 वाले कौन से हैं? AB है, AC है, BC है, BD है, AD है, और कोई है जो छूट गया? 1 2 3 4 5, एक और छूट गया। AB हो गया, AC हो गया, BC हो गया, BD हो गया, CD, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने। ठीक है, now if you just focus on getting the value of using this, can we say that if we add everything, I will be getting A plus AB plus AC, A plus AB plus AC, yes or no? If you take this 40, this is nothing but what, this plus this plus this plus this plus this plus this, everything, ये सबको अगर हम ऐड करें, out of which ABC anyway is given to us as 10. So can I say A plus AB plus AC, this must be equal to 30? ठीक, सिमिलरली यहाँ पे बताओ मुझे, अगर B वाले को देखेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा? We'll be getting B, AB, BC and BD. ठीक है, ये दोनों का सम कितना हो गया? 25, इसमें से माइनस कर देना है। So we are getting B plus AB plus BC plus BD. This must be equal to what? 95 minus 10 minus this. ठीक है, which is equal to 70. वैसे इसमें भी करना है, यहाँ पे क्या ना, इक्वेशन बनाने रही, कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, पर ये इसको ऐड कीजिए सर। C C D B C A C, C plus C D plus B C plus A C, ठीक है। अगेन इसको माइनस कर दीजिए 25, तो दिस इज इक्वल टू 50। अभी लास्ट वाले को देख लेते हैं, तो कितना आ गया? D प्लस सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 55 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है ना, इफ यू ऐड देम, कैन आई से इसका सम हमको दिया हुआ है, इसका सम हमको दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे, एंड वी आर गेटिंग ए बी ट्वाइस, वी आर गेटिंग बी सी ट्वाइस, वी आर गेटिंग ए सी ट्वाइस, वी आर गेटिंग सी डी ट्वाइस, वी आर गेटिंग बी डी ट्वाइस, ये सुनो।
right? And what we need to identify, can I say AD? यहाँ पे तो ये तो zero है ना, this is zero. So we have to find AB, AC, BC, BD, CD. Each one of them is twice. If I add all these, देखो AB यहाँ पर है, यहाँ पर भी AB है, तो ये twice है. AC is here, AC is here, ये भी twice है. BC is here, BC is here, ये भी twice है. BD is here, BD is here, ये भी twice है. CD is here and CD is here, ये भी twice. So that means adding all them, I'm getting A plus B plus C plus D plus जो भी मुझे required है, let us assume it to be X, है ना? उसका 2 times should be equal to what? Summation of all this. कितना हो जाएगा? 100 हो गया, 190 हो गया. इसकी वैल्यू दिया हुआ है 70. So 2 times of X is equal to 190 minus 70, which comes out to be how much? 120. So the value of X is equal to 60 and that becomes your answer. Option B इसका आंसर हो जाएगा. ये देखो क्या लेंदी है और कुछ नहीं. First you need to understand the structure, ये पता होना चाहिए. And then once this is known, इसमें ना Maxima Minima पूछ रहा ना कुछ पूछ रहा. You have to just frame the equation for all these 4, add them and get the value. ठीक है? तो इतना बोरिंग और लेंदी है, that's why ये बहुत पॉपुलर भी. ठीक है? इसका नॉन पॉपुलैरिटी का एक रीजन ये भी है कि ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं है, बिकॉज लेंदी करना कोई चैलेंज थोड़ी होता है. गेटिंग इट? ठीक है, चलो भाई, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, अदरवाइज आज का सेशन डन है, बिकॉज दिस वाज जस्ट 2-3 थिंग्स कि मुझे लगा कि एक बार मैं बता देता हूँ. विद दिस वी आर डन विद द वेन डायग्राम. एंड प्लीज रिमेंबर, जो क्लास 2 सेकंड जो क्लास लिया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्लास 3 वाले. आज की क्लास ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस करी. हाँ, वही बोला ना, टाइम कंज्यूमिंग है. हाँ, ये क्वेश्चन मैं तब बनाऊंगा जब मेरे को DILR में मान लीजिए 4 क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन आ रहा है, देन इट्स वर्थ अटेम्प्टिंग, बिकॉज आई कैन गेट मोर आंसर्स ना. अभी तो चलो सिंगल क्वेश्चन तो आपने डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, बट एज अ क्वेश्चन अगर आता है तो कम से कम 4 तो क्वेश्चन होने चाहिए उसमें. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द वेन डायग्राम. सब चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. स्टिल माय फेवरेट इज गो टू द पजल, पजल वजल सॉल्व करो, मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करो, मॉक दो, मॉक के सेट्स को सॉल्व करो. कौन से पैरामीटर की बात करो बेटा? सो क्वेश्चंस ऑफ एनबी पैरामीटर लो, देख लो. बताओ, कोई क्वेरी है तुम्हारा इसमें? 2 सेट कहाँ, 2 सेट करो, 2 सेट, एक सेट तो कम से कम बनना चाहिए, उसके बाद दूसरे सेट. हाँ रोशन, पूछो, कुछ पूछना था आपको? कोई क्वेरी था आपको? नहीं मतलब उसका कोई फोटो वोटो ले रहे हो? सर स्टार्ट में एक सेट को ही टारगेट करो. हाँ, एक एक को, तुम्हारे पास 4 है ना, तुम एक ही सोचो बनाओ, एक की कंसिस्टेंसी लाओ ना, उसके बाद दूसरे का कुछ पोर्शन बनेगा, फिर दूसरे भी बनने लगेंगे. 2 कंसिस्टेंटली बन रहे हैं, दैट मींस यू आर ना राइट. सिंपल. कई बार क्या होता है ना, मॉक भी बेकार होते हैं. बेकार कहने का मतलब कि अननेसेसरी का चारों के चारों डिफिकल्ट डाल दिया. दैट डजंट मेक एनी सेंस ना. थोड़ी तो उसमें वेरिएशन और वैरायटी होनी चाहिए, सो दैट कि लोग का सिलेक्शन करने का जो प्रैक्टिस है वो भी हो. बट क्या बोल सकते हैं? एनी क्वेरीज गाइस? और सर भी रैप अप, सारा चीज हो गया है ना, जिन्होंने बहुत मतलब स्टार्टिंग से हमको ज्वाइन किया है, लैब का सारा ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. 5 सेट है, देन 3 सेट नहीं, 2 तो भी 2 ही बनाओ. नंबर ऑफ सेट बढ़ जा रहे हैं, टाइम थोड़ी बढ़ रहा है. अगर 5 सेट आ रहे हैं तो भी 2 ही सेट का ही बनाना है. ऐसा नहीं कि उस प्रोपोर्शन में टाइम, आपका नंबर ऑफ सेट बढ़ा देने से टाइम, ना टाइम बढ़ रहा, और ऐसा भी नहीं ना 5 सेट देखने के बाद दिमाग भी 20% बढ़ जाएगा या 25% बढ़ जाएगा. 2 सेट ही बनाना है. ऐसा नहीं बोला 2 सेट बनाने के बाद रुक जाना. मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक होना चाहिए ना बेसिकली एस्टिमेशन, रियलिस्टिक एस्टिमेशन. वो 2 सेट का होना चाहिए, वो 4 है चाहे 5 है, उससे फर्क नहीं. ठीक है, अभी खूब प्रैक्टिस करना है बस आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है. खाली प्रैक्टिस करते जाना है. यू हैव टू जस्ट, आई वुड से, बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो आपका प्रोसेस है ना, मेथड है, उसको मोर एंड मोर थोड़ा रिफाइन कर दो. ठीक है.
देखो एक सेट बना लेने से उतने परसेंटाइल आ जाते हैं कि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ वगैरह है ना, वो एनीवे क्रॉस हो जाता है। सेकंड सेट बनाना और उसमें अटेम्प्ट करना थोड़ा बहुत प्लस माइनस होके वो आपका 99 भी आ जाता है, डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी का है। ठीक है भाई, चलो तो सेशन कॉल ऑफ करें। कुछ डाउट वगैरह नहीं है, कुछ है तो आप अनम्यूट करके ही पूछ सकते हो, ठीक है। सर हाँ। सर मैं पूछ रहा था, जैसे मेरे को जैसे डीआई अच्छी नहीं लगती और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, हम्म, तो मैं मोस्टली मॉक्स में क्या करता हूँ कि जैसे 2 सेट 4 सेट का मॉक है, हाँ उसमें 2 डीआई और 2 एलआर के सेट आते हैं। हाँ हाँ। तो जैसे कि अपना डीआई का जो सेट है ना, उसमें मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। नहीं मतलब आप जानबूझ के नहीं करते कि डीआई इसलिए नहीं करूंगा ऐसा? हाँ, मैं 1-2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता हूँ उसमें। नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट एमबीए में है या तुम्हारा इंटरेस्ट कैट के एलआर में है? मेरा मेरा इंटरेस्ट तो कैट क्लियर करने में है। कैट क्लियर करने में ना, तो उसमें तुम्हारे पसंद और नापसंद से क्या लेना देना है? नहीं सर, बट उसमें नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। नहीं, मेरा देखो दो चीजें है। व्हाट यू सेड इज दैट यू डिसलाइक दैट, हाँ सर, एंड कॉन्फिडेंस सेकंड नहीं थिंग इज आता दैट सर यू उन डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। नो, डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट तो एक बात दूसरी हो जाती है। बट हाँ इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट बट बिकॉज यू डिसलाइक दैट यू डोंट गिव इट टू प्रायोरिटी, दैट्स अ क्राइम। योर मेन जॉब इज टू गेट इनटू गुड बी स्कूल ना, उसके लिए ये पसंद नापसंद मतलब वही बात होगी ना। जॉब तो किसी को पसंद नहीं है, फिर भी करते हैं ना लोग। हाँ सर। तो ऐसा थोड़ी मतलब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। नहीं सर, उसमें जैसे कि प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं आपको एलआर की बता साइड नहीं। ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। what I'm trying to say that yes, you do everything, but what I'm saying is that not understanding the set and because it is difficult, leaving it is a different thing. But DI है, हो सकता है DI सबसे एकदम इजी आ जाए, उसको सब लोग बनाएंगे, आप कैसे छोड़ सकते हो उसको? हाँ सर, वो तो है। तो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होना है ना उसमें। ठीक है सर। ठीक है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो मतलब थोड़ा मतलब उल्टा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, इसीलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, आपके लिए कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, देखो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग किसके लिए, जैसे फैकल्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ठीक है, आई लाइक मोर एलआर देन से डीआई, तो हम्म। प्रोबेबली आई टेक मोर सेशंस ऑन एलआर। मैं चलो डीआई किसी और को दे दूंगा जिसको डीआई पढ़ा। हाँ सर। बट फॉर एस्पिरेंट बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग, और सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग से ही उसको छोड़ देना जस्ट नॉट अ गुड। आपको आना चाहिए, क्योंकि आया और इजी होगा तो नंबर चाहिए मुझे, कौन से साइड से बना के आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ कोई सर। नहीं जानता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। चलो भाई, तो बंद करते हैं। राउंड अकाउंट, एक देयर इज अनदर सेशन वेटिंग फॉर यू।